आ गई लॉस हार्ड और सॉफ्ट में फर्क आ गया। इसके बाद है हमारे पास distinction between soft and softer laws। थोड़ा सा स्लाइड का जो फर्क है वो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। Soft laws often designed to be flexible and adaptable to changing circumstances. They allow for voluntary compliance and can be adjusted without the need for formal amendment। Softer laws reflect informal norms and practices, offering a degree of flexibility based on evolving societal expectations। जैसे जैसे आपकी जो बनती जाती है ना स्लाइड से डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर लॉज वो ऐसी हैबिट जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है आप उसी के साथ इवॉल्व कर रहे जा रहे हैं। ये सोसाइटी कर रही है उसी का अकॉर्डिंगली आप कर रहे हैं। वो जो है ना वो वॉलंटियरली कंप्लाइंस करता है। वॉलंटियर में आप चाहो तो करो चाहो तो ना करो ऐसा कोई इसमें नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी formality typically involve more formal instruments such as guidelines, resolution, international regulations। Software laws may be ethical, may be less formal, encompassing, मतलब कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी या जैसे आप उदाहरण में पढ़ते हो मैडम मरियम एक गाइडलाइन बनाती है पूरी इस तरह की कि आपने ये फॉलो करनी है ना भी करो तो कोई मसला नहीं। एट द सेम टाइम सॉफ्टवेयर लॉ थोड़े से वो होते हैं आपके लिए किस तरह एथिकल कोड कस्टम विद इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। मैं क्लास में कह दूं कि आपने ये चीज इस तरह करनी है बोल दो अगर वो चीज तो राइट डाउन कर दो तो उसमें आ जाए ऊपर वाले में बोलने वाले नीचे वाले में। ये सब इतना मेजर डिफरेंस नहीं एक ही बात है सॉफ्ट और सॉफ्टवेयर। इसी तरह इन्फोर्सेबिलिटी वही है किस्म की आगे चलने से ये मेजर डिफरेंस है। मतलब कि कैटेगरी जो हम सोचते तो पढ़ रहे थे प्राइमरी है सेकेंडरी और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से क्या मुराद है? सब दी गई इख्तियार जब आप किसी को देते हो डेलीगेट करते हो। मैं इख्तियार देता हूँ कि अबू बकर आएगा क्लास में कंप्लाइंस करवाएगा। कंप्लाइंस का मतलब अटेंडेंस भी करेगा क्लास में बच्चों की टाइमिंग मैनेजमेंट एक दूसरी अबू बकर करेगा। मैंने डेलीगेट की अपनी पावर किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी आज नीचे मतलब primary legislation definition है primary legislation refers to laws enacted by the legislative body of a country typically a particularly specifically parliament ही होती है और कांग्रेस। These laws are the highest form of legal authority and cover a wide range of issues from fundamental rights to criminal offences। ये कह रहा है कि प्राइमरी जो लेजिस्लेशन होती है जो आपका पार्लियामेंट होता है जिस तरह पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने 1973 का आईन बनाया उसके अंदर सबसे जो मेजर चीजें डिस्कस करते हैं वो ये करते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और क्रिमिनल ऑफेंसेस की जो मेजर है जो ये ऑफेंस करेगा उसकी सजा ये होगी जो इन राइट्स की इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा तो वो उसके अधीन आता है। ऐसे लॉज जो कि प्राइमरी है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री का कोई यूके के अंदर पार्लियामेंट होता है यहाँ पार्लियामेंट होता है पाकिस्तान कांग्रेस में यूएस के अंदर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। एग्जांपल इन द यूनाइटेड किंगडम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आल्सो नोन एज स्टैट्यूट आर द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन। फॉर इंस्टेंस the Equality Act is a piece of primary legislation that addresses anti-discrimination laws and equity in the UK। हमने जिस तरह की चीजें पढ़ी थी समझ लगा कि जो major law which was made by the parliament is called is the primary source। उसके
is secondary or delegated legislation. अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, secondary legislation also known as a delegated legislation. Or subordinate legislation is law made by authorities or individuals other than the primary legislative body under the authority granted to them by primary legislation. This is a way for the legislator to delegate the detailed implementation of laws to specific body. For example, I am the authority of this law. I delegated my power to Abu Bakr that after all, from today, you will handle each and every issue of this law. You will handle the attendance, you will handle the punctuality, each and everything is compliant by the Abu Bakr. मैंने पावर Abu Bakr को delegate की. इस तरह के example मिली है. The Environmental Protection Act 1919 in the UK is an example of primary legislation. However, under this act, ministers are given the power to create specific regulation for environmental protection. एक law है, primary legislation for example पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का आईन, वो जब प्रेसिडेंट को पावर देता है, प्रेसिडेंट जब आगे डेलीगेट करता है ना अपनी चीज, उसकी भलाई के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो डेलीगेटेड या सेकेंडरी सोर्स आ जाता है. फॉर एग्जांपल these regulations created by ministers constitute secondary or delegated legislation. For instance, the Waste Management Licensing Regulation 1994 made under the authority of the Environmental Protection Act provide detailed rules for waste management. एक जो रूल बना Environmental Protection Act by पूरी environment state के तहत ये मेजर है प्राइमरी मिनिस्टर्स को पावर दी गई कि भाई आपने रेगुलेशन करानी. उन्होंने एक सब ऑर्डिनेट लॉ बना दिया, उसके अंदर कुछ चीजें बना ली. वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है उसकी ये चीजें उन्होंने अपने तरफ से अपनी पावर को क्या इस्तेमाल करते हुए नया है, उसके अंदर बड़ी कैटेगरी उसके सबऑर्डिनेट कोई चीज जो उसके अंदर साइड है. समझ में आ रही है? जिसमें हेड ऑफ स्टेट होता है सर, वो अपनी पावर जो होती है डेलीगेट कर देता है, वो डेलीगेशन करता है, सेकेंडरी सोर्स है. फिर आपकी हायरार्की ऑफ लॉज, लेजिस्लेशन, केस लॉ, रूल्स ऑफ कॉमन लॉ एंड आपकी स्लाइड में लेजिस्लेशन समझ गए? यस सर. लेजिस्लेशन के अंदर दो चीजें आ रही हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. लेजिस्लेशन refers to laws created by the legislative branch of the government, typically a parliament which is the primary source. वो again and again repeat हो रही है. तो पहली सोर्स आपकी क्या है? लेजिस्लेशन. इसके बाद चले सेकंड ये प्राइमरी को फिर अगेन हमने डिफाइन किया और जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पता है ये भी वही सेम चीज है, पता चला. Case law, the rule of common law and equity. Definition: case law, also known as judicial precedent, comprises the decisions made by judges, individual judges. It plays a significant role in the shaping of law, particularly in any legal system which combines common law and equity. समझ आ गई मैडम? ये ऐसी चीजें जो इंडिविजुअल केसेस से जजेस को डिफाइन करते हैं, वो भी आपकी बन जाए. वो भी एक मेजर प्रेसिडेंट है, मैटर्स अ लॉ एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया. इस तरह कॉमन लॉ का मिसाल दीजिए. कॉमन लॉ इज ए बॉडी ऑफ लॉ डेवलप्ड थ्रू द डिसीजन ऑफ जजेस इन इंडिविजुअल केसेस. लीड डिसीजन becomes precedents and are used to decide similar cases. एक दफा तो जज एक केस में फैसला बड़ा सुना देता है, लार्जर बेंच सुनाती है. फ्यूचर में इस तरह कोई मसला आएगा, भाई वो अगला जज कहेगा कि भाई ये फैसला इसके अकॉर्डिंगली हम फैसला करें, बजाय वो नई चीज करने के. तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड इस जजेस के अकॉर्डिंगली हम ये जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो मिसाल इस केस के अंदर एक नेग्लिजेंस वाली बात है. अगर कोई गलत प्रेसिडेंट है तो वो पहले नहीं हो नहीं होता है. अगर ये हमने वहां पे लगाया कार्बन टेस्ट जो था वो गलत था, तो फिर स्किन स्कल टेस्ट था वो भी सर गलत था. क्या प्रेसिडेंट सर क्रिमिनल लॉ में कार्बन टेस्ट था जो कि एक रेगुलेटरी पार्टी थी, बहुत सख्त कर दिया और पनिशमेंट को. तो फिर वो बाद में सारा डिबेट वगैरह जिसके ऊपर फिर वो अबॉलिश कर दिया गया.
इस तरह फिर इस तरह के होते हैं लोग या तो विद द मैसेज अपने गवर्नमेंट नहीं कर सकते हो जाता है प्रेसिडेंट होते हैं बहुत सारे हमारे पास सिक्योरिटी जो हमने पढ़ी है सिक्योरिटी वाले साथ ये चीजें मैं आपको पहले ही पढ़ा देता हूँ दिस इज द लास्ट स्लाइड hierarchy, precedence, security and fairness, adaptability, role of them. Hierarchy, whether primary or secondary, holds the highest authority in the legal hierarchy when elected by the official legislative body. The UK के अंदर जो highest law made body है वो कौन है? पार्लियामेंट। President, secondary क्या चीज आती है? Case law, जो कि आपके jurisdiction like England is a vital decision in previous cases becoming a binding or persuasive precedents for similar cases. सबसे पहली चीज आ जाती है आपके सोर्सेस लॉ के अंदर पार्लियामेंट इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी आ गई पहली बात दूसरी बात आ जाती है केस लॉ जुडिशियल प्रेसिडेंट थर्ड वन इक्विटी का प्रिंसिपल फेयरनेस का बराबरी मसावत का equity developed to address the limitations of common law and to ensure justice in specific situation it operates alongside common law principles. समझ आ रही मैडम ये चीज after that adaptability legislation allows for the creation of new law adoption करना आपका मुल्क जा रहा है एक रन में अचानक कुछ चीजें आ जाती हैं आपको जरूरत पड़ती है वक्त के साथ एडॉप्शन करने की तो आप नए लॉ को एडॉप्ट करते हैं अपने मुल्क के अंदर while these laws adopt legal principles to changing circumstances ठीक है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जरूरत पड़ जाती है बहुत ज्यादा किस्म की चोरी होना शुरू हो जाती है ये सख्त लॉ बना देते हैं जो भी चोरी करेगा हाथ काटेंगे इसको बोलते हैं एडॉप्टेबिलिटी इसके बाद रूल ऑफ जजेस जजेस प्ले इनिशियल रोल है इंटरप्रिटेशन ये इसमें उसका फर्क है ये है केस लॉ यस प्रेसिडेंट ये इंटरप्रिटेशन दशमी करना है कोई लॉ बना हुआ है उसकी एम्बिग्यूटी है कोई कंफ्यूजन है किसी को समझ में नहीं आ रही ये इंटरप्रेट करते हैं कि भाई इसका मतलब ये है interpreting legislation developing common law principle and applying it to the results of crime it means कि वो इसको अकॉर्डिंगली सिनेरियो पे अकॉर्डिंगली उसको करते हैं दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेस ये जितनी भी चीजें आज पढ़ी उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर आउटलाइन by next week inshallah we will read by details एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी ना अभी कोई सवाल किसी कोई चीज तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसके अंदर 5-6 लॉ के सब्जेक्ट है तो हम पहले तो कानून को पढ़ेंगे लॉ होता क्या है इंडियन का सिस्टम किस तरह है इंग्लैंड के अंदर कानून कैसे आया कोडिफाइड है अनकोडिफाइड है फिर सोशल में क्या है हायरार्की क्या है कोर्ट सिस्टम किस तरह करती है ये एक चीज आ गई उसके बाद थोड़ा स्टूडेंट्स को पढ़ेंगे फेक थ्योरी क्या होती है माइंड क्या है उसके पीछे थर्ड आइडिया को पढ़ेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एंड वी विल रीड द mooting एंड लीगल राइटिंग वो पढ़ेंगे उसके अलावा एक और सब्जेक्ट था सिविल एंड क्रिमिनल इन द यूनाइटेड किंगडम ठीक है मंगवानी है आप वो भी क्या समझ लेकिन मुझे चीजें तो पढ़े एक चीज थोड़ी आप लोग जो भी बैठे हो नेक्स्ट वीक में प्लीज 10 पर आप पहुंच जाना है और मुझे ये मत मुझे